Hello everyone, welcome to our channel Learn with Motivation। इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के MCQ रिवाइज करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि ना सिर्फ IT 402 बल्कि सभी स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट्स की इम्पॉर्टेंट बुक है और इस बुक में इससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के MCQ, 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स। इस बुक के अंदर टोटल 5 यूनिट हैं। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट, यूनिट 3 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 4 entrepreneurial skill, unit 5 green skill। Which of the following function is not performed using a mouse? A turn on, B hover, C right click, D drag and drop। माउस के देखो कई फंक्शंस हैं, तो इसमें से कौन सा एक माउस का फंक्शन नहीं है? And the right answer is turn on। टर्न ऑन माउस का फंक्शन नहीं है। Which of the following is not an element of communication within the communication process cycle? देखो नोट पे हमेशा ध्यान देना, नोट में उल्टा आना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट को देखते नहीं हैं और गलत आंसर कर देते हैं। चैनल, रिसीवर, सेंडर, टाइम। कम्युनिकेशन साइकिल जो प्रोसेस आपने सीखा हुआ है, तो उसमें से एक उसका एलिमेंट नहीं है। The right answer is टाइम। देखो एक पर्सन है, जैसे मैं आपको एक मैसेज सेंड कर रही हूँ, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज सेंड कर रही हूँ, तो मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, और हमने एक क्या ले रखा है, चैनल ले रखा है, तो चैनल के थ्रू हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। बट इसमें टाइम का कोई मतलब टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइम ये काम हो सकता है ना। Entrepreneurs can create job in market. Is it true? False? You can't say none of this. Now check your answer. Right answer is that is true. एक entrepreneur सिर्फ अपना काम ही नहीं करता, वो और भी जॉब्स क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। Jyoti works hard to get the best student award at the end of year. ज्योति बहुत मेहनत कर रही है, एक स्टूडेंट है, उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड चाहिए, ठीक है, तो वो बहुत मेहनत कर रही है। वट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? अब वो जो बहुत मेहनत कर रही है, ये किस टाइप का मोटिवेशन है? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, नॉट स्पेसिफाइड मोटिवेशन। Now check your answer. Right answer is internal। देखो वो अपने आप को ही मोटिवेट कर रही है ना, वर्क मेहनत कर रही है, वर्क हार्ड कर रही है। अगर कोई दूसरा उसको करता मोटिवेट, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मोटिवेशन? इसमें से कौन सा एक मोटिवेशन का टाइप नहीं है? ऑप्शंस आर इंटरनल, इंटरमीडिएट, एक्सटर्नल, एक्सटेंसिव। And the right answer is एक्सटेंसिव। टाइप ऑफ मोटिवेशन जब आपने किए होंगे तो आपने देखा होगा एक्सटेंसिव उसका कोई भी टाइप नहीं है। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन ने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं? ऑप्शंस आर 18, 17, 15, 20।
Now check your answer. Right answer is 17. टोटल 17 गोल्स होते हैं. तो ये आपको आई थिंक रट जाना चाहिए. हम बार बार इसको ये पॉइंट को कर रहे हैं. डिफरेंट मेथड ऑफ डैश आर फेस टू फेस टॉक, ईमेल लेटर्स, notice board, poster, meetings, phone call, video call, virtual meeting, writing blogs, etc. ये सब जो मैंने अभी पढ़े हैं ना, ये सब क्या है? क्या ये सब पैराग्राफ्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सिस्टम्स हैं या कम्युनिकेशंस के मेथड्स हैं? बताइए ये सब किसके मेथड्स हैं? आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आ गया होगा इमीडिएट. राइट आंसर इज कम्युनिकेशन. Different methods of communications are face-to-face talk, email letters, notice board, posters, meetings, phone calls, video calls, virtual meeting, writing blogs, etc. Dash can be defined as our emotional, mental, physical, and social reaction to any perceived demands or threats. Options are stress, confidence, communication, ecosystem. इसमें से कौन सा एक मतलब हमें इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक तरह से? द राइट आंसर इज स्ट्रेस. अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशली हर्ट फील करते हो. Which of the following activities do not reduce stress? इसमें से कौन सी एक एक्टिविटी आपके स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं करती है? योगा, डे ड्रीमिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन. And the right answer is daydreaming. Daydreaming activity do not reduce stress. The 4 R's of waste management. वेस्ट मैनेजमेंट जब हमने किया था तो उसमें 4 R's सीखे थे. ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस आर ए रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. बी रिपेयर, reduce, reuse, refuse. C. Refuse, reduce, recover, recycle. D. Refuse, reduce, rethink, recycle. जल्दी से अपना आंसर कमेंट करो. And the right answer is A. Refuse. कि आपको रिफ्यूज कर देना है, प्लास्टिक यूज नहीं करना. रिड्यूस, अगर करना भी पड़ रहा है तो कम से कम यूज करो. रीयूज, ऐसा यूज करो जिसको कि आप बार बार यूज कर सको, है ना, वेस्ट नहीं करना. रिसाइकल, हो सके तो उस प्लास्टिक को रिसाइकल के लिए दे दो. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट अबाउट करंट और रिसेंट न्यूज आइटम्स ऑफ जर्नल इंटरेस्ट और स्पेसिफिक टॉपिक is which form of writing? Options are article, letter, essay, paragraph. Now check your answer. Right answer is article. The process of creating a non-fiction text about current or recent news item of journal interest or specific topic is which form of writing? It is article. राहुल इज अनेबल टू स्कोर गुड मार्क्स. राहुल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं. एंड ऑफन फेल्स टू सबमिट हिज असाइनमेंट ऑन टाइम. और वो अपना कोई भी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कराता है. इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज ही माइट सफर फ्रॉम विच ऑफ द स्ट्रेस. अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसको किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है? फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल और सोशल. Comment your answer fast. And the right answer is
मेंटल, राहुल को मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। टू कट द फाइल और फोल्डर, विच शॉर्टकट की विल यू यूज ऑन द कंप्यूटर? अगर आपको कट करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? इज इट कंट्रोल वी, कंट्रोल वाई, कंट्रोल पी और कंट्रोल एक्स? एंड द राइट आंसर इज कंट्रोल एक्स। देखो सीजर याद रखा करो, सीजर का लुक में ही एक्स है, तो दैट मीन्स कट, कट के लिए एक्स। Which of the following is not promotional entrepreneurial function? Options are idea discovery, financing, detail investigation, directing. Now check your answer. Right answer is डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग किसी भी तरह का प्रमोशनल एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन नहीं है। Everything you store on your computer is stored in the form of a dash. Files can be separately placed into group called dash. आप जो भी कंप्यूटर के अंदर बनाते हो, काम करते हो, उसे क्या कहते हैं? और अलग अलग फाइल्स को जब एक ग्रुप में एक जगह रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सेंटेंस, पैराग्राफ। ऑप्शंस आर सेकंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। सी प्रोग्राम विंडो, डी फाइल फोल्डर। Coming to your answer. Now check your answer. Right answer is file and folder. Everything you store on your computer is stored in the form of a file. Files can be separately placed into group called folder. The communication which help to understand others' thought and feeling, वो कम्युनिकेशन जिसमें आप दूसरे के थॉट्स और फीलिंग समझने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। एंड द राइट आंसर इज verbal communication. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट लर्निंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट के मतलब होता है कि आप सीख रहे हैं क्या? ऑप्शंस आर हाउ टू अवॉइड द प्रेशर ऑफ लाइफ, बी द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, सी to avoid all kind of stress, D how to develop skill that would enhance our body's adjustment when we are subjected to the pressures of life. And the right answer is stress management is about learning how to develop skills that would enhance our body's adjustment when we are subjected to the pressures of life. Which of the following is not the physical sign of stress? Boredom, fatigue, breathlessness, hyperactivity. Right answer is boredom. Boredom is not the physical sign of stress. This allows the user to change various settings in a computer. Options are search box, taskbar, control panel, recycle bin. इसमें से कौन सा एक अलो करता है यूजर को कि कंप्यूटर की सेटिंग चेंज कर लो? द राइट आंसर इज
Control panel. Control panel allows the user to change various settings in a computer. Which of the following is not something that can be invested? Options are energy, expertise, money, time. And the right answer is expertise. Hope you understand all the topic very clearly. और आपको क्लास 9, क्लास 10 एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सॉल्व एक्सरसाइज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.